Hello students, today is the last lecture of this topic, Indian economy on the eve of independence. मैंने previous 3 lectures में आपके इस particular chapter की detailing study करी है. Those who are listening me for the first time, kindly subscribe my YouTube channel for more updates on economics, accounts and BST. अभी overall economics 12th macro has been updated on my channel. 12th ID is going on and talking about 11th micro and statistics. Those lectures have been updated on my YouTube channel. It's available for free. आप जाके एक बार देख सकते हैं. Do share the videos. Do subscribe my channel for more updates. Okay. Or any problem you have, you can just DM me on Instagram as well. Chale. So let us start with the today's last video on this particular topic, that is Indian economy on the eve of independence. Now see students, अपन ने अभी तक occupational structure समझ लिया. Occupational structure के बाद particularly infrastructure is remaining. We have also studied the agriculture structure. We have also studied about what was the condition of demography in the previous lecture. Now, in this lecture, we will be first starting with what was the infrastructure facility at the time of eve of independence. मतलब eve of independence के टाइम पे आपकी कंट्री की क्या कंडीशन थी related to infrastructure. What was the situation? How the Britishers have managed the infra at that particular moment of time? उन्होंने कैसे infrastructure manage करा ना? What comes in infra? Okay, you can say roads, railways, okay, health and other things also. Yes, आपके good health facilities are also considered. Good education facilities are also now being considered as a part of infrastructure. This particular chapter is your one of the chapter. Infrastructure is there. आगे अपन ID में देखेंगे. Now, before starting with the state of infrastructure, let me introduce the types of infrastructure. Basically, the infrastructure के कितने types हैं? So basically, first this definition is capital invested by the country. मतलब capital investment कौन कर रहा है? Capital investment is done by the country that helps in first production, second distribution, and third is consumption. Okay, so whatever capital you are investing, that investment is either helping in production, either helping in distribution, either helping in consumption. So ये तीन basic, particularly these are the three basic. अभी जब अपन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था बेटा, तो ये मैंने आपको बताया था, दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. Three activities. First start with the production, then it start with distribution, and at last it end at the कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी बोला जाता है. तो इंफ्रा क्या कर रहा है? इंफ्रा इन्हीं चीजों को मैनेज करने के लिए हेल्प कर रहा है. आज समझ लो रोड है तो वी आर हेल्पिंग, दी रोड्स आर हेल्पिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन. Take for the example, banking है. Banking is also an infra facility. It is helping in all the three activities. Production में भी help कर रहा है, distribution में भी help कर रहा है, consumption में भी help कर रहा है. अगर आपके पास लोन नहीं आएंगे तो आप consumption कैसे करोगे? So in that case, any facilities which is helping in these three activities, capital invested for the production, distribution and consumption. Now, let us focus on this. There are two types of infrastructure, beta. First is economic infrastructure. In this, we can consider railway, transport, power, communications, banking, even. So these all are economic. This also usme profit motive attached. And other are social infrastructure. Now, what is social infrastructure? Here, these facilities are mostly provided by government so as to make this as the feasible rate. मतलब हर कोई उसे अफोर्ड कर सके. मे बी इट्स वाटर सप्लाई, मे बी इट्स एजुकेशन. इन योर प्रेजेंट सिनेरियो एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स आर देयर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर देयर. सो ये सारे किस किस के अंदर आएंगे? दिस विल बी कंसिडर अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन बाइफिकेटेड इनटू टू टाइप्स, इकोनॉमिक एंड सोशल. इसकी डिटेल स्टडी हम तब पढ़ेंगे व्हेन आई विल बी टेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर. जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब आपको इसकी डिटेल स्टडी बताऊंगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउ दिस इज मैनेज्ड.
Now, what was the state of infrastructure at the eve of independence? सबसे पहले अगर देखा जाए तो at the eve of independence, here again I have given one short form, that is K. Now, C is for what, beta? C is for communications. A is for what? Air and water transport. What was the situation of air and water transport at that moment? Second, R is for roads and E is for encouragement of railways. मतलब railways कैसे particularly at the time of situation of eve of independence, railways were the major goal of Britishers. उसके लिए क्यों? Why Britishers were having this railway as a target? I will tell you that why Britishers was having the main particular scope for development on the railways. Britishers ने railways introduce करे थे बेटा इंडिया में, and that was one of the positive effect. चलो now coming to communication. उस जमाने में communication के तौर पे क्या मिलता था? Post and telegraph. Telegraph was electronic. Were the most popular means of communication. Electric telegraph, as I told you, electronic available था. In help in India to maintain law and order. अब देखो बेटा, उस टाइम पे इंडिया was not only the colony of Britishers, there were many colonies of Britishers at that moment of time. वो ट्रेड करने जिस भी जाते थे तो वो वहाँ पे कॉलोनियल रूल अपना जमा ही लेते थे, तो उनको लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में मैनेज ही करना है, उनको हर जगह मैनेज करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन. अब वहां अगर पोस्ट दूंगा तो वो पहुंचते पहुंचते पता नहीं महीनों लगा देगा, इसीलिए टेलीग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस. दिस वॉज अगेन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. Telegraphs was being introduced. Electronic telegraphs were being there to transfer message electronically from one place to another. आज तो डिजिटल का जमाना है, तो अपन एक वीडियो क्या हो जाता है, वायरल हो जाता है. वन मैसेज दस वायरल इन बिटवीन few hours or few particularly minutes that gets viral. So in that case वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज तब नहीं थी, पर आज फैसिलिटीज हैं. We have certain facilities, so we are making that particular law and order up to the mark. But at that moment communication के भैया दो ही तरीके थे. First was your post and second was your telegraph. Now let us focus on the A, that was air and water ट्रांसपोर्ट. भैया एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की क्या मतलब है अभी? चलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स आल्सो. सी, आई टोल्ड यू अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, पर रोड्स भी डेवलप किए गए थे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो. यहाँ पे colonial administration could not construct large roads due to shortage of funds. रोड्स दो चीजों के लिए बिल्टअप हुए थे बेटा. पहला था मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह. ये आपने अभी मूवी केसरी, इफ यू हैव सीन अक्षय कुमार रोल, सो रोड्स के थ्रू तो वो दिखाया नहीं, बट अगर आप उससे रिलेट कर पाओ कि भैया हमको आर्मी को इस पोस्ट से दूसरे कैंप पोस्ट पे भेजना है, इस पर्टिकुलरली एरिया से दूसरे एरिया से भेजना है, तो उन्होंने रोड्स डेवलप करवाए. पर उसके पीछे यही दो रीजंस थे, एंड सेम रीजन वर फॉर डेवलपिंग ऑफ रेलवेज ऑल्सो. कि रेलवेज अगर हम डेवलप करवा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे ये दोनों काम हो जाने चाहिए. फर्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ माय आर्मी फोर्सेस इजीली एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स. क्योंकि देखो उस जमाने में वाटर ट्रांसपोर्ट वाज द मेजर सोर्स टू ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एयर ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं हुआ था. सो वहां पे मेजर सोर्स ऑफ पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स वाज कंसर्न कि भैया जो सी पोर्ट्स थे, नाउ सी पोर्ट्स मोस्टली दी बॉम्बे एरिया, महाराष्ट्र एरिया, तमिलनाडु एरिया, दी सर्दर्न एरियाज, तो वहां से उन्होंने क्या करे, रेलवेज डेवलप करे ताकि जो मिड रीजन्स हैं वहां से रेलवे लाइन कनेक्टेड होगी. और ये रेलवे लाइन कहाँ पे एंड होती थी? दे वर एंडिंग एट दी सी पोर्ट्स, ताकि कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए, एक ऐसा बॉन्ड डेवलप हो जाए ताकि मैं रॉ मटेरियल्स लेके आ जाऊं और फिनिश गुड्स फिर उस मार्केट में पहुंचा भी सकूं. I told you in the first four lecture that they considered India as a feeder economy. उन्होंने इंडिया को क्या मान के रखा था कि भैया हम इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी लेके चलेंगे. कैसे इकोनॉमी लेके चलेंगे? We will be considering India as a feeder economy. Feeder economy in that sense that we will take the raw materials and we will provide them the finished goods. Okay, so यहाँ पे इन्होंने एक और रीजन, बट शॉर्टेज ऑफ रोड टू रीच आउट द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन पे क्या था, कच्चे रास्ते थे, सो इजीली वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फिर बंद हो जाता था. एज अ रिजल्ट पीपल लिविंग इन द एरिया सफर्ड बैडली ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज एंड फेमाइन्स, क्योंकि रोड्स डेवलप नहीं. अब सपोज टेक द एग्जांपल, कोई कैलामिटी आई,
अब अभी हमारे पास है इंफ्रा, वी आर हैविंग particularly airways, we are having most of the other ways to transfer the goods, but at that moment मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा अपनी particular goods to those particular person? ओके, सो एट दैट मोमेंट यहाँ पे इम्पैक्ट बताया कि कॉलोनीज डेवलप हुई थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज डेवलपिंग द रोड, बट फॉर ओनली फॉर देयर पर्पस, वो किसी और के पर्पस के लिए डेवलप नहीं करना चाहते थे। Next, coming on to the encouragement of railways. I told you, encouragement of railways. अब बेटा यहाँ पे एक और 1 मार्क ऑब्जेक्टिव आ जाता है। Britishers introduced railway in the year 1850. ये ईयर याद रखना, when the Britishers introduced railways in India, it was 1850, and it considered as one of their most important contribution. ओके, अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इनका माना जाता है दैट दे मेड रेलवेज, दे कंट्रीब्यूटेड रेलवेज टुवर्ड्स द इंडिया, इंडियन कंट्री। सेकंड, इसके दो फायदे हुए। पहला, इट हेल्प दी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आराम से ट्रैवलिंग हो पा रही थी, इट वाज ब्रेकिंग ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। सेकंड, इट इम्प्रूव्ड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आपका जो एग्रीकल्चर जो पहले सिर्फ फूड क्रॉप्स बना रहा था, उसका कमर्शियलाइजेशन ज्यादा हो गया, क्योंकि सरकारों को क्या चाहिए था, कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज रिक्वायरिंग, बोलो बोलो, दैट इज रॉ मटेरियल्स चाहिए थे। उन्होंने पूरे एग्रीकल्चर को एज वर बीइंग कंसीडर एज द फीडर इकोनॉमी, जो पूरा एग्रीकल्चर जो पहले फूड क्रॉप्स पे बेस्ड था, बेसिकली it converted into a commercialized agriculture system which was focusing only on raw materials. This was the particular uh, impact of railways. अब आगे बढ़ते हैं। So next is your air and water transport. Now, construction of inland trade and sea lands was not satisfactory at all, and it was very costly. Inland trade and sea lanes, मतलब अपनी ही कंट्री में मान के चलो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाने के लिए बहुत टाइम लगता था और कॉस्टली था। Indian waterways proved to be uneconomical, as in the case of coast canal of Orissa coast. उड़ीसा कोस्ट पे वहां पे इतना इकोनॉमिकल नहीं था, क्योंकि रॉ मटेरियल्स वहां पे नहीं पहुंच पा रहे थे। फेल टू कंप्लीट विद द रेलवेज एंड फाइनली कैनाल टू बी डिस्कार्डेड। मैंने वही बोला कि वहां पे रेलवेज इतने डेवलप नहीं हो पाए, इट वाज फेल टू कंप्लीट विद द रेलवेज एंड फाइनली कैनाल हैड टू बी डिस्कार्डेड। मतलब उड़ीसा वाला जो कोस्ट कैनाल था वो उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, बाकी सारे चैनल्स चल रहे थे। Now, last topic of this particular chapter is positive impact of British Empire on India. क्या है positive impact of British Empire? Here also I have given one short form, that is basic. First is barter system converted to monetary system. Second is admin system. Administration system में क्या क्या changes हैं? Third is spread of railways. Fourth is increasing commercialization of agriculture. And C is for check on famines. मतलब famines पे कैसे उन्होंने changes लेकर आए, how they have changed the outlook of all over. Let us understand this one by one. Now here they were focusing on what? They were focusing on first making India a particular economy where barter system was to be replaced with the monetary system of exchange. आज अपन मनी सिस्टम एंजॉय कर पा रहे हैं बिकॉज इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि एट दैट मोमेंट वहां पे क्या चलता था, बार्टर, मतलब गुड्स के बदले गुड्स। वी हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर सिस्टम इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो, कि बार्टर का मतलब क्या है, जहां गुड्स के बदले गुड्स दिया जाए वो हो जाता है बार्टर। बट पहला जो थिंग था ब्रिटिशर्स का, दे कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ मॉनेटरी system. They made barter system not been working. Now they are focusing on monetary system. अब इसके चक्कर में क्या हुआ, साइज ऑफ ट्रेड क्या हो गया, बढ़ गया। पहले साइज ऑफ ट्रेड क्या था, रेस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि बार्टर सिस्टम वाज देयर। बट एज मॉनेटरी सिस्टम केम इन इंडिया, जैसे मॉडर्न सिस्टम आया उसने अपने पर्टिकुलरली साइज ऑफ ट्रेड को इंक्रीज कर दिया, बिकॉज नाउ देयर वाज नथिंग। जैसे अगर आपने सुना होगा, दैट वाज देयर वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो जब मनी सिस्टम आ जाता है तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की रिक्वायरमेंट नहीं। मान के चलो आज मुझे पेन चाहिए,
मुझे पेन चाहिए मार्केट में, तो मैं पहले पेन वाले को ढूंढूं, पर उसके जगह मेरे को उसको ऑफर भी करना पड़ेगा। तो सपोज आई हैव अ कप, ओके, सो इन दैट केस कप मैंने उस पर्सन को दिया और उसने मुझे पेन दिया, पर प्रोवाइडेड कि सामने वाले को भी तो कप की जरूरत होनी चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज दिस, मींस मैं सामने वाले से पेन ले रहा हूँ और सामने वाले को कुछ दे रहा हूँ, ताकि उसने मुझे पेन दिया है तो उसके बदले मुझे उसे कुछ देना पड़ेगा। तो भैया हमारी जो वांट्स हैं वो मैच करने चाहिए। मुझे ऐसा पेन वाला ढूंढना पड़ेगा जिसको कप की जरूरत है। अगर उसको कप की जरूरत है ही नहीं तो क्या वो मेरे को पेन देगा क्या? दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपके मैच होने चाहिए, पर ऐसा मनी सिस्टम में नहीं है बेटा। आप कैसे मनी सिस्टम में नहीं है? मान लो मुझे पेन चाहिए, मेरे पास कप है, मैंने कप मार्केट में बेचा। मार्केट में जैसे ही बेचा, मेरे पास सपोज आई गॉट दी करेंसी नोट, जैसे ही मेरे पास करेंसी नोट आए, करेंसी नोट से मैंने क्या करा, करेंसी नोट लेके मैं गया मार्केट, और मार्केट में जाके मैंने पेन परचेज कर लिया। अब ये मनी सिस्टम का इम्पैक्ट है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ मनी सिस्टम विच हैज बीन गिवन बाय द ब्रिटिशर्स एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि मनी सिस्टम इज increasing the size of trade as well as business. At that moment, that was their first advantage. Is this clear to students? Okay, मैंने और सिंपल वे में आपको विद एग्जांपल इसे समझा दिया। अब आ जाते हैं सेकंड, दैट वाज एडमिन सिस्टम। एडमिन सिस्टम ब्रिटिश का बहुत स्ट्रांग था, वो अभी तक चल रहा है। पार्लियामेंट that was introduced by Britishers. So Indian economy got a system of efficient administration from Britishers who bring all independent state in a common frame. मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे सबके सब कॉलोनियल पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए। मान के चलो ये अलग रीजन है, यहाँ का अलग राजा है, उसको ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर लिया। ये अलग रीजन है, उसका अलग राजा है, उसका राजपाट अलग है, उसको कॉन्कर करके ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर लिया। सो ये पर्टिकुलरली इम्पैक्ट था। इंडियन इकोनॉमी गॉट द सिस्टम ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन विद ब्रिटिशर्स ओनली। बाकी सारे इंडिपेंडेंट स्टेट जो थे वो खत्म हो गए और एक कॉमन फ्रेम के अंदर आ गए जिसका नाम था इंडिया। नेक्स्ट एडवांटेज एंड पर्टिकुलरली गिवन वाज स्प्रेड ऑफ रेलवेज। ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करे थे रेलवेज 1850 में। दैट वाज देयर फर्स्ट इम्पैक्ट। द रेलवेज इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक। रेलवेज ने क्या करा? रेलवेज ने यहाँ पे पीपल को पर्टिकुलरली दे स्टार्टेड changing the particular, they started giving what long distance travel, thereby breaking the geographical and cultural barriers। जो मैंने पहले अपने लेक्चर में बताया that it helped the people to break geographical and cultural barriers। सेकेंडली ये उनके लिए भी इम्पैक्टफुल था बिकॉज रॉ मटेरियल्स को इजीली सप्लाई कर पा रहे थे। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या करना चाहते थे भैया? वो एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज इसलिए करना चाहते थे बिकॉज दे वांटेड रॉ मटेरियल। पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया के पास कैसा है? आप एक बात समझो, अगर आप ज्यादा कैश क्रॉप्स बनाओगे तो ज्यादा कैश आएगा, एक्सपोर्ट्स आप ज्यादा करोगे तो इससे इकोनॉमी के डेवलपमेंट भी हो रहा है। जैसे आज के केस में वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग गुड्स टू आउटसाइड इंडिया, तो इससे जीडीपी तो बढ़ेगा। बट एक चीज है दैट यू शुड बी हैविंग द पर्टिकुलर सरप्लस फूड फॉर द फूड रिक्वायरमेंट। पर वहां पे ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी बिकॉज दे वांटेड टू मेक फर्स्ट एग्रीकल्चर कमर्शलाइज। उनको क्या करना था? कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पहले करना था, एंड दैट इज द मेजर एस्पेक्ट। एंड देन उन्होंने क्या करा? दिस अनडाउटेडली इंक्रीजेस व्हाट? इंडियाज एक्सपोर्ट। अनडाउटेडली किसका चेंज हो गया? इंडियाज का एक्सपोर्ट चेंज हुआ एंड इट इंक्रीज द पर्टिकुलरली स्पेंड। सो ये पर्टिकुलरली इम्पैक्ट था ऑफ योर ब्रिटिशर्स। एंड लास्ट वाज चेक ऑन फेमाइंसी। ट्रांसपोर्टेशन का एक और पर्टिकुलरली हेल्पफुल हुआ कि सपोज एक रीजन में फेमाइन कॉज हुआ। फेमाइन इज व्हाट? यू आर नॉट हैविंग दी फूड सप्लीमेंट्स, यू आर नॉट हैविंग दी फूड क्रॉप्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? भैया रोड डेवलप है, रेलवे डेवलप है, चलो यहाँ से अपने फूड सप्लीमेंट उठाए और उस अफेक्टेड एरिया पे अपन ने पहुंचा दिए। दे वर फोकसिंग ऑन दीज पर्टिकुलर things that they can check on famines also, and they rush to drought hit areas very easily because at that moment kya tha? At that moment we were able to manage the famines very easily। Students, we are on the end of the session, okay?
We are on the end of the session now. मैं important years आपसे बस एक बार last में clarify कर लूँगा. The important years at that moment of time were first of all 1850. कौन सा year सबसे पहला? Date wise चलते हैं. So it was 1850. 1850 को क्या हुआ था बेटा? अभी बताया था. Introduction of railways. By whom? By the Britishers at that moment. 1850 के बाद आया आपका 1869. 1869 में क्या हुआ था? Opening of Suez Canal. ये याद रखना. फिर उसके बाद आया 1881. 1881 is the first official census of India. कब हुआ था भैया? It was the first official census. एंड उसके बाद लास्ट में बेटा जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है वो आया था 1921, जिसको बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. ओके, जिसको क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. सो ये बेसिकली याद रखना. टू एवरी स्टूडेंट दिस इज माय रिक्वेस्ट कि ये चीजें आप अपने पर्टिकुलरली याद रखना. दैट 1850 दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज. 1869 it was opening of Suez Canal. 1881 it was first official census, and 1921 it was year of great divide. These are the events important year-wise for the chapter 1, that is Indian economy on the eve of independence. Chaliye. Thank you students for listening this lecture of mine. Do subscribe my channel for more updates. I am available on YouTube. If you have any doubts regarding the particular topics of economics, you can personally DM me on Instagram or on Facebook. I'm available on both. That is with the name Kapil Goplani. Also, I have an FB page in name of Kapil Goplani Coaching Center. You can search it. It's also available. My YouTube channel is with my name only. That is Kapil Goplani. You can subscribe it for economics, BS, and accountancy lectures. BST and accountancy lectures will be posted very soon. Economics is almost getting been completed this year. Micro statistics already completed. Macro ID is going through. Macro is also completed. ID I am just completing within this particular month. So thank you students for listening today's lecture. Have a good day.